Right. Namaste. Welcome everyone to the third program of Rajyogi Power of Breath Foundation's Tridosha Balancing Program for Kapha Reduction. The main aim of the program is to reduce kapha or phlegm in our system. There are many people who suffer because of excessive phlegm in the system. हिंदी में और संस्कृत में the word is kapha, kapha dosh. Kapha dosh is an imbalance. It is connected with tattvas. Uh, Everything in our phenomenal universe is made of panch tattvas: Prithvi, Jal, Agni, Vayu, Akash. I'm sure many of you are aware of this. I don't need to explain that aspect. For those who are interested from the Ayurvedic point of view, there are three main doshas. Dosha, uh, Kapha, Vayu, and Pitta. Kapha is a combination where uh, earth and water create the imbalance. Pitta is the imbalance where fire and water are responsible for the imbalance, and Vayu is where sorry, Vat is where Vayu and space or ether that is responsible for that imbalance. According to Ayurveda, any imbalance in the system can lead to other imbalances. So if there is a kapha dosh, it can lead to other doshas as well. Similarly, if there is pitta dosh, it can lead to kapha or vata and so on and so forth. The reason we are focused on kapha is because my body is a kapha type of body, and the program, the clarity has grown from my own observation and what has happened to me and how I've been able to deal with my own kapha related problems. So that is the basis for my understanding and knowledge. And I've been teaching Shwasko Shuddhi Kriya, ये which वैलिड लाइट है फोन में ऐसे जवाब देगी तो लाइए मैं Shwasko Shuddhi Kriya focuses on helping participants take out any phlegm in the system, from the respiratory system particularly. The Tridosha balancing program goes deeper. The first thing is to take out the kapha or the phlegm from the respiratory system. But the second part, the advanced course, focuses on reducing the amount of phlegm in the respiratory system. My body is a kapha type body, and there was a time when my body was like a phlegm factory. It used to produce so much phlegm. But because I was very keenly a breath watcher and breath worker, I would work on my breath, try to understand how my breath was working through me and how it could help me deal with different kinds of conditions. Of all the things that we do as human beings, of all the things that we do to survive, breath is the single most important thing. Nothing is more important than breath. The Sanskrit word for breath is also prana. Prana is also equivalent of life force. So in many ways, breath signifies life force. As long as we continue to breathe, we continue to live. When breathing stops, life ends. So breath is a very, very important part of all that we do. And in many ways, it is, in a sense, synonymous with life. We pay our attention, we give so much attention, we focus on so many other things in life, but the most important thing, our breath, nobody seems to focus on that. In our program, our focus is breath, and we use our understanding and awareness of breath not only to take out kapha, not only to free ourselves of phlegm, but also later to reduce the amount of phlegm that is there in our system.
Other than that, we also go deeper to see how we can use breath to start healing different kinds of ailments, different kinds of illnesses, different kinds of conditions that may affect us. And this is all based, like I said, on first hand experience. It's not based on hearsay, it's not based on second hand knowledge, it's based on uh, direct first hand experience. I've been teaching some of these techniques on online and also offline, both for S. Vyasa, Swami Vivekanand Yog Anusandhan Sansthan, which is a very well-known university, a deemed university in Bangalore, and it's headed by Guruji, Dr. Nagendra, and of course my humble respects to Dr. Nagendra, who gave me an opportunity to start teaching for S. Vyasa. Also, my very, very humble uh, obeisances to Hanumanji, because of whom whatever I know about breath, whatever insights I have, whatever clarity I have, and whatever breakthroughs I have got uh, are courtesy Hanumanji. And as we go through the program, you'll begin to understand why I say that. And I'll also share some of the stories which led me to that clarity and so on. Now, before we dive deeper into this, I want you to take a few seconds and become aware of your breath. You may close your eyes for a few minutes, for a few moments, and just focus on your breath as you breathe in and as you breathe out. Yeah. So be with your breath as it comes in, as it goes out. Second thing, keep your belly relaxed. Breathe in through your nostrils. See how deep your breath goes. Observe the pathway of your breath. It enters through your nostrils, and then try to observe how it's going, where it's going, and how it's coming out. Continue to watch your breath. Try to follow the pathway of your breath. It enters through your nostrils, and then try to see how it's coming in and how it's going out. And then once you have some understanding, some clarity, share with me. Please share with me what you have observed. So when you wish to speak, you can unmute yourself and tell me what is the pathway of your breath? What are you observing? Rekha ji says, I can't. I can't do what? Chandrama ji, pranam. Pranam ji. Yeah, somebody tell me, please. What did you observe with your breath? What is the pathway your breath is taking? It is going directly from nostril to stomach, sir. But my left hand side lungs is a bit tight, means I'm feeling bit tight. Feeling like spasm are basically accumulated in the lungs, left hand side especially. Okay. Okay, fine.
So We directly will. the wind Hmm. is basically passing from nostril to the belly. But I'm So not so from here it enters, and then you feel it in the belly region. Okay, fine. That is your observation. No problem. Uh, Sir, Harsha Usher is saying passing through lungs, then to belly. Okay, so she's feeling her breath go till the lungs and then maybe till the belly. Okay, fine. Anybody else? Somebody said nose till belly. सर प्रणव Yeah, Pranam ji. Ji. अ, सर जब ले रहा है तो पूरा पेट पेट तक जा रहा है, ये एहसास हो रहा है। और जितना टाइम ले रहा है तो उससे ज्यादा टाइम निकलने निकल रहा के समय हाँ वो हो रहा है। है। अच्छा, अच्छी चीज है। नो हार्म। एनीवन एल्स? Good evening. गुड इवनिंग। नमस्ते। बताएं। Sir, वही same चीज कि I am जी taking from nostril जी। and it's मतलब stomach is coming outside. Just give me a moment. An important call. Just a moment. Yes. हेलो मामी जी, प्रणाम। Yeah, sorry, Rashmi ji, go on. Yeah, Sir, Rashmi ji, बोलिए। Sorry. sir, shall I talk, sir? I am I- Deepika. एक second. Let Rashmi ji finish what she was saying, अच्छा, अच्छा, and okay. then we'll continue. Yeah. Yes, Rashmi ji. Yeah, sir. Sir, I can feel it fully going on out down till my tailbone. Okay, very good. tailbone तक Okay. and फिर ऊपर भी आ रहा है but वो shortness Hmm. बहुत heavy लग रहा है because I'm feeling Okay. like wheezing. मेरे को Okay. inhaler लेने का मन था but I told I अभी Oh, inhaler नहीं okay. Okay. I'll come back to you. Very good. Yes. Buttercups ji. Buttercups classes ji. नहीं sir, Deepika. Interesting name. Sorry. No, but the name that I I can see have, is Butter. yeah, I have joined from this today, sir. Sorry. No, no, Uh, no problem. Nothing to be sorry. That's the name I see, so I said that. I'm sorry. जी Yeah. Sir, जी same problem. I was जी feeling very this thing कि maybe my breath will suffocated me, but I hold it. कि I will हम्म not take inhaler at that time, and I ओके controlled myself and I ओके breathed out and breath in, ओके but from ओके stomach only. Yes, sir. ओके फाइन Nostril वेरी and stomach. Yes. okay, so you're feeling till your belly button and also till your tailbone. Tailbone, I didn't feel, Okay, but okay, that was Rashmi stomach, ji. yeah, that was Okay, Rashmi ji. Yes. okay, but I can tell you one thing, both in Rashmi ji's voice and in your voice, I can tell very clearly कि आपके कफा है. There is a fair Yes, amount of sir. kapha in your lungs. I can make that out in your Lot of experiences. cuff, sir. Lot of Yeah, I cuff. can make that out. वो आवाज से मुझे समझ में आ रही है. या अच्छा. विधि बोथरा जी बताएं. So when I, आर के वेलनेस. ओके, आर के वेलनेस बताइए. सॉरी. sir, when I take a breath because my belly come up and this breath I feel because it is going till down to our the sacral to root chakras, ओके. and this belly is come out when I take a breath from nose. ओके ओके फाइन, वेरी गुड. वृद्धि जी, वृद्धि बोत्रा जी, आप बताइए. Sir, the breath is from nose to the respiratory system only, but we can feel the breath uh, till our navel ओके, region. so okay, अब let's go deeper now. So most of you are saying you can feel it in your chest area, and of course some of you are saying in the navel area. The navel area is somewhat similar to the Manipura chakra area. Now, in the yogic system and in our Indian systems, we speak of seven major chakras, right? Starting with the Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddhi, Agya, and Sahasrara. So, seven major chakras. Some of you are feeling your breath yeah till till your, Sahasrara. yeah. I Some of was you are feeling feeling, it till the Sahasrara.
Okay. Yeah. So some of you are feeling your breath until your belly button area. One or two people, like Rashmi ji said, she can also feel it in the Muladhara, tailbone. Excellent. Your breath should be able to go to your Muladhara. Unfortunately, most people do not have this experience, largely because their mind is already conditioned. The mind has been made to believe that breath goes till the lungs, gas exchange happens, it comes out, end of story. So most people have that limited understanding of breath. And I say limited because yogis and also many people here will have noticed that your breath actually goes deeper. In some of the programs that we do, you will actually feel your breath very clearly, and not only feel your breath, you'll be able to channel your breath down from the nostrils till the Muladhara. From the Muladhara, turn it and move it up along the spine. That is the pathway of the Sushumna. In English, the term that is roughly similar is the vagus nerve. We will also do that in this course. We may not do too much of this in the first 3 days, but definitely in the advanced course, we will jump into the Hanuman Master Breath technique, which is part of the technique that helps you take your breath up the spine. We will also explore what I call lotus opening. Lotus opening uh, is a breathwork technique जिससे your vascular health can improve. I don't know what term to use, because it is such a phenomenal change in the quality of your breath. Therefore, I will just leave it at that. There is a huge improvement in your vascular health. Before we started, I was having a short conversation with Shailaja ji here. She has done one of the Tridosha balancing program earlier, so she's familiar with some of the techniques that we are talking about and teaching. And then, of course, she noticed a lot of improvements, but for some reason, she's not been able to continue to do the techniques. And well, it's nice that she's joined the program again so that she can revive whatever she was doing. So we will do some of the lotus opening techniques again, but that will also be part of the advanced course, which will start after 3 days. Now, before we go deeper, our first goal is to cleanse our respiratory system of kapha, which I will begin to explain in a few moments. But since we have spoken a little about uh, Hanuman Master Breath, Sushumna, and the lotus opening techniques, let's take a couple moments again. Be with our breath. Relax yourself as much. Oh, by the way, I have been sharing belly breathing videos with in the group repeatedly. Have you been doing the belly breathing techniques? Yes or no? Please answer me quickly. Yes or Yes, no? sir. Yes, Okay, sir. very good. Yes, Rashmi ji, Yes, very sir. good. Yes, But sir. what about the others? I want yeses from everybody, not just a few people. Purva ji is typing yes. Yeah. Yes. 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 Rajvanti. Okay, Rajvanti, very good. Yes. What about the others? Yes, Harsha Yes, ji, sir. yes. Yes. Who was that? Y- I Yes, forgot. Ajit. Sajid, very good. Okay. I can't see you here because you're not on the front page. You're probably in the second page or something. Okay. Maybe I don't know how to get there. Okay, now I see. Okay. But your video is not I will showing up. put on the light. Yeah, I will put on the light. All right. Sangeeta ji, Akshay ji, all right. Yeah. So I see some old faces, but I also see some new faces, and that's good. Right. So take a few minutes, be with your breath. And now I want you to observe the amount of time that you take to breathe in. So relax your whole system as much as you can. And as you are relaxed, take an in breath. Mind you, I'm not asking you to take an in breath slowly. I'm saying take a fast in breath.
Keep yourself as relaxed as possible and time yourself as you take a full in breath. So when I say full in breath, I mean fill up yourself as much as you can, as quickly as you can, but time yourself. So what you can do is maybe turn on your stopwatch. Like it's too bright, so maybe you can't see. So like this, you can turn on your stopwatch, and as you take a full breath in, start as you begin, and then the moment you stop, stop your stopwatch, observe the amount of time, make a note, and keep it somewhere. So start, take a slow, no, take a full deep breath as fast as you can. Relax yourself, exhale fully first, let everything go out, and then full in breath. Notice the time, make a note somewhere if you like. Once again, just to make sure that you've got it right. Exhale fully, empty your lungs, empty your respiratory system of all breath, and take a full breath as fast as you can. Be as relaxed as you can be, and time yourself. And now tell me what time you have noticed. Of course, make a note yourself, but some of you can tell me what have you noticed. How fast were you able to take a full in breath? Nikita ji, yes. Good evening, I sir. can. Yes, good evening. Sir, it was inhale of 5 seconds and Okay. exhale of 8 Exhale, I'm to not talking. I'm not talking about exhale yet. I'll come to that later. 5 seconds to be precise. 5 seconds to be precise. Right. Okay. Very good. 5 Sir, seconds by 8, Nikita ji. sir, Haji? 8 to 9 seconds. 8 to 9 seconds. Inhale. Very good. Anyone else? And mine was first 7 and then second 8. 7 Between and 7 and okay. 8. 7 and 8. Okay. 1 7, 1 8. Yeah. Okay. Anyone else? Sir, 5 seconds. RK Wellness 35 seconds. 5 5 seconds. seconds. Okay. See, my point was what? I'm not asking you to take a slow breath. I'm saying take a full breath as fast as you can. Once again, tell me, how fast were you able to take? DPG 7.88. Okay. Very good. Anyone else? Now tell me something. If your body needs more breath, because breath also brings oxygen. To do anything, we require a good amount of oxygen. So do you think taking a fast in breath is good? Or do you think taking a fast in breath is not good? Especially when you're doing sports. Yeah. PP, Padma Priya is 5 seconds. VJ, Vriddhi Botra is 4 seconds. Okay, that's good. Very good. Anyone else? Somebody said 35 seconds, but that's not a fast breath, I'm sure. So in yoga, very often we speak of slowing down the breath. That's good. The slower we are able to breathe, the better results come in many areas of our life. However, there are times when we need to breathe fast, or we need to breathe in more oxygen because it's required to function. For example, as a sports person, or to do something where more uh, prana energy is required in our system. That is when we should be able to take a full breath faster. Keep your record, write down whatever you have noticed. We will, of course, do it for, we'll refer to it again at some point later in our program. Now I want you to be relaxed. Take a slow and full deep breath, as deep as you can. And then as you exhale slowly, without stopping, time the amount of time as slow as you can be. So now, fast breath followed by a slow exhale, as slow as you can get.
So try and time that now. Take a full deep breath, not fast. You can take it slowly also, but exhale, time your exhale and see how much you are able to do, how much you are able to clock with a slow exhale, slow as possible. So 13 seconds. Slow exhale, okay? Write it down somewhere, okay? Keep a note. We have to count inhale or exhale. I told you, we have already done the inhale. For the inhale, we did a fast inhale. For the exhale, we are doing a slow exhale. So Deepti ji is saying 20 seconds. Harsha is 28, 20, 28 seconds. 28. Who's 28? I can't see you. Chandrima ji. Okay, very good. Chandrima ji. Excellent. Very 15 good. seconds of exhale. 15 seconds. Samsung ji. YS. Okay. That's the name I can see. Okay. Anybody else? Exhale is between 7 and 9. I'm Rashmi. Exhale is how much? Between 7 and 9. Inhale and exhale both are 7 and 9. Okay. Yeah. Okay. So 15 seconds. 15 seconds, Ajit. Very good. Okay. Now, in yoga, we consider it a good thing to be able to exhale slowly. But remember one thing, slow exhale only becomes possible when we are very relaxed. So, for example, you will notice when you are in meditation or you are deep in meditation, your breathing changes. It becomes smoother, it becomes lighter. And very often, some people may even get the impression or feeling as if there is no breathing happening at all. This is a good thing. But that happens during meditation. Please make a note, whatever you have timed. I have I have shared a link in the chat. Please take a look. I'm doing it once again. This is a form where your particulars are requested for. So please put in your details, your name, age, and other details. One of the things that is asked is also how fast is your inhale, how slow is your exhale, your BP, and so on. So please fill up this form as soon as you can, and it will help us with the research efforts that we are taking up, because to be able to help a good number of people, we need to be able to demonstrate how techniques or processes are helping people gain from them. So, collection of this information is important, and by filling up the form, not only now but also later, you will help with this very powerful endeavor. Now, please understand one thing, the Tridosha balancing program, the role, the game, the purpose, the intention is not to make money for Rajyogi Power of Breath Foundation. That is not the game. That is not the purpose. The purpose is to help as many people as possible to improve the quality of their breath, to help them breathe better. However, it does cost money, and therefore, if you are able to help, if you're able to contribute, especially for the advanced course, it will be very helpful. If you can help in other ways, wonderful also. Data collection is also going to be part of the process, because we will use this data to turn out research and review papers in the days ahead. There is a neuroscientist who is involved with our program, and he will be using this data to make his own conclusions and assessments and so on. So keep this note, whatever you have done so far. Be aware of your breath even as we go deeper into the program, starting now. Any questions so far? Anybody? Gulab Singh ji, Dr. Saab, namaste.
So Gulab Singh ji, I've known Gulab Singh ji for a very long time. I think maybe 5, 6 years. Probably from the earliest days that I started sharing some of these techniques. So it's good to see Gulab Singh ji. He's a doctor. He's a doctor himself. So it's good to have him as a participant in our programs. Yes, Rashmi ji. सर, Any? as you mentioned कि मेरे आवाज में कफ लग रहा है, कफ सुनाई जी. दे रहा है, बट हम्म. मैंने जब डॉक्टर्स को दिखाया है तो बोले चेस्ट में कंजेशन नहीं है, तो ऐसे हो Uh, सकता है? See, I don't know about what doctors say, how they understand. वो उनकी understanding है. I'm a lay person, I'm not a doctor. But based on my own experience, मुझे समझ में आता है जब वो आवाज में एक वो मफल्ड सी आवाज आती है तो मुझे समझ में हाँ आता है हाँ कि हाँ, ओके। ये अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में कफ का है दोष. आप देखेंगे मेरी आवाज में मफल्ड टोन या उस तरह का नहीं है. आवाज काफी क्लियर नहीं है. आती, ये क्लियर है सही तो है। ये इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी है. बहुत कई समय काफी वर्षों का समय लगा है टू अंडरस्टैंड दिस, टू परफेक्ट द टेक्निक्स दैट आई नाउ शेयर. तो ओके, आप भी करेंगे तो आपका भी बहुत इंप्रूवमेंट होएगा. एंड if you are fond, if any of you here is fond of singing, you will understand कि आवाज में यदि वो मफल्ड आवाज आती है तो यू कांट टर्न आउट अ गुड सॉन्ग. तो आनंद नहीं आता है किसी भी गाने का. बट इफ योर वॉइस इज क्लियरर एंड शार्पर, तब वो एक अच्छी अच्छी फीलिंग आती है उस गाने में. तो आपके गान में भी उसका फर्क पड़ेगा. आपके आवाज की क्वालिटी में भी एक अच्छा इफेक्ट आएगा. एंड सो ऑन. सो नाउ. सर, सर सर गाने एक का एक शौक है, पर हाँ गाने का जी. शौक है, पर मैं गा नहीं सकती हूँ। क्यों? नहीं क्योंकि गा थ्रोट सकेंगे. आप 3 महीने बाद मुझे बताइएगा. 3 महीने बाद मुझे बताइएगा आप गा थैंक यू, सकती है कि नहीं गा सकती. थैंक यू सर। जी. सर गले का अंदर ना एक एक टाइम लगता है कि वो कफ जमा रहता है, तो जी. ये क्या वो कफ दोष के कारण में ही होता है? जी हाँ. तो जब जब अच्छा। बिकॉज आप देखिए, आवर बॉडी प्रोड्यूसेस सम फ्लेम, सम कफ, एंड दैट इज नॉर्मल. उसमें हर्ज भी नहीं है. थोड़ा कफ आवश्यक है शरीर में. अपने लंग्स में भी थोड़ा बहुत फ्लेम या म्यूकस होना आवश्यक है. प्रॉब्लम इज जब वो ज्यादा अधिक मात्रा में हो जाता है, देन इट इंटरफियर्स विद आवर ब्रीदिंग. इट इंटरफियर्स विद आवर ब्रीदिंग बिकॉज वो जो म्यूकस लेयर की तरह जम जाता है अपने लंग्स में. इट इंटरफियर्स विद द एक्सचेंज ऑफ गैस. एंड देयरफॉर जिसको भी कफ का दोष है, अस्थमा है, सीओपीडी है, आईएलडी है, ये जो कंडीशंस हैं, दे आर वेरी वेरी डिबिलिटेटिंग. वो शरीर में लगता है जान नहीं है, एनर्जी नहीं है. इसलिए क्योंकि आप ब्रीदिंग कर रहे हो, बट वो ब्रीदिंग का जो लाभ मिलना चाहिए शरीर को मिल नहीं पा रहा. बिकॉज द बॉडी इज नॉट एबल टू अब्सॉर्ब either the oxygen or even the prana shakti that is coming through the breath. Yeah, Dr. Gulabji, सर अगर Gulab Singh ji. सर ये सर, ये जो आप जो बोल सेकंड रहे हैं टाइम, कि म्यूकस जाम होता है लंग्स के अंदर, तो वो क्या हार्ट अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, देन इन दैट केस आल्सो म्यूकस आर बेसिकली जैम्ड इन द लंग्स? बबीता जी, आई एम सॉरी, आपकी आवाज, वो गुलाब सिंह जी कुछ बोल रहे थे तब आपने बोलना शुरू किया तो मैं समझा नहीं पूरा. एक बार लेट मी कम बैक टू यू. पहले गुलाब सिंह जी की बात सुन लेता हूँ. हाँ, डॉक्टर साहब सर बोलिए. आई एम आस्किंग कि जो सेकंड टाइम आपने बताया कि स्लो इनहेल करना है, एक्सेल, एक्सेल. उसके हाँ, बीच में होल्ड तो नहीं है, कंटिन्यूस मैंने, एक्सेल? हाँ, कंटिन्यूस एक्सेल, कंटिन्यूस जी, कंटिन्यूस एक्सेल. थैंक यू। हाँ, बबीता जी बोलिए. हाँ सर, आप जो बोले कि एक म्यूकस जाम हो जाता है लंग्स में एक लेयर की तरह, तो वो क्या अगर हार्ट अगर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है तो उस केस में वो हो सकता है? आई एम श्योर उसका भी इफेक्ट होता ही है, डेफिनेटली. बट माय माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग इज, यदि वैस्कुलर हेल्थ आपके शरीर में कोई भी कारण से अफेक्टेड है, वैस्कुलर हेल्थ माने जो वेसल्स हैं जिसके थ्रू ब्लड चलता है, लिम्फेटिक फ्लूइड फ्लो करता है, या इवन आवर रेस्पिरेटरी वेसल्स, वैस्कुलर चैनल्स कनेक्टेड विथ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यदि इनमें कोई भी तरह का कंस्ट्रिक्शन है, यदि वो चैनल्स छोटे हो जा रहे हैं, जैसे सपोजिंग इतना है नॉर्मल और वो कम होके ऐसा हो गया, सिकुड़ गया, तो इट विल अफेक्ट एवरीथिंग इन आवर बॉडी. सो वैस्कुलर हेल्थ इज, in fact lately I've been writing and making videos on this subject quite a lot,
बिकॉज वैस्कुलर हेल्थ जैसा जैसा मैं समझ रहा हूँ, इट इज सेंट्रल टू आवर वेल बीइंग. If you are able to control or improve your vascular health, धीरे धीरे you will be able to impact every part of your body. However, for this part of the program, our focus is on expelling phlegm. अपने शरीर में जो म्यूकस है, जो फ्लेम है, उसको निकालने का पहला अपना गोल है. तो उसके लिए अपन अब श्वासकोश शुद्धि क्रिया के 3 टेक्निक्स सीखेंगे. श्वास को शुद्धि क्रिया में 3 अलग अलग क्रियाएं व्यवहार करेंगे. पहली क्रिया का नाम है हफिंग टेक्निक. हफिंग माने आपने जैसे कीप योर बेली रिलैक्स. यदि आप बेली ब्रीदिंग कर रहे हो, विच आई बीन रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी टू डू, दैट इज वेरी गुड. इफ यू आर बेली ब्रीदिंग, आपका सिस्टम रिलैक्स्ड है. योर सिस्टम इज मच मच मोर रेडी for any kind of breath work. So if you have been belly breathing, you will be able to take advantage of this program much better. If you have not been belly breathing, please start as soon as you can. Whatever techniques I'm going to share and show you, you have to understand the condition of your body. I will explain some of these things, guide you along the way, but your body is your responsibility. I am not going to be responsible for what you do with your body. यदि आपका शरीर कोई चीज के लिए तैयार नहीं है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं नॉर्मली बोलता हूं, इफ योर बॉडी इज नॉट हैप्पी, स्लो डाउन. एक बार रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए, फिर थोड़ा सा ट्राई करिए. बॉडी एक्सेप्ट करता है तो करिए, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता तो बैक ऑफ. ट्राई अगेन आफ्टर सम डे, सम आवर्स और सम डेज. छोड़ना छोड़ना नहीं है, करना है, धीरे धीरे करना है, प्रोवाइडेड योर बॉडी एक्सेप्ट्स. तो इसको हमेशा याद रखें कृपया करके, कि आपको वही करना है जो आपका बॉडी आपको परमिट करता है, अलाउ करता है, एक्सेप्ट करता है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ओके फॉर योर बॉडी. उसके अलावा यदि मेरे से कुछ प्रश्न होगा, डेफिनेटली आई विल ट्राई एंड आंसर. और भी कोई डीपर कोई प्रॉब्लम है आपके शरीर में, कोई तरह की कंडीशन है जिससे आपको कोई तरह की असुविधाएं होती हैं, प्लीज आस्क योर डॉक्टर, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर और योर हेल्थ स्पेशलिस्ट, so that you are guided in a good way. Most of the techniques that I share are actually very simple, very easy, not too much of a problem. But in the first part of this program, huffing technique में थोड़ा सा प्रेशर यूज करना आवश्यक है. तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं और कैसे अपने आप को आगे चलना है. एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी regarding what I have said just now? If anyone has any questions, if थोड़ा थोड़ा हिंदी में बोल तो रहा हूं मैं. हाँ चंद्रिमा जी, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. एनी क्वेश्चन सो फार? So please listen to your body. Do as your body guides you. If your body feels uncomfortable with some of the techniques, slow down. Take it easy for a while. Try again after some time. If it's okay, great. If it's still not okay, back off. Do it again after some time. Send me a message. Connect with your doctor. Connect with your health specialist. Get guidance. Clear? Let's go further. I'll mute सर everybody. जी. ये जो बैली ब्रीदिंग करनी है, खाली पेट जी. करनी है या कुछ खा के भी कर सकते हैं? बेली ब्रीदिंग खाली पेट, भरती पेट, सोते समय, उठते समय, सब समय करना है. बेली ब्रीदिंग के बारे में मैंने जो वीडियो शेयर किया है, आई हैव एक्सप्लेन्ड इन दैट प्लीज डू बेली ब्रीदिंग ऑल द टाइम. लेट इट बिकम योर डिफॉल्ट ब्रेथ. इसका मेन रीजन है, अब जाऊंगा तो इसमें भी इसी में फंस जाएंगे थोड़ी देर, बट एनीवे, यदि आप बेली ब्रीदिंग करते हो तो योर बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ बीइंग रिलैक्स्ड. योर बॉडी इज इन अ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में your body is able to heal and repair itself better. So therefore, belly breathing is our foundation breath. All my programs, no matter what programs, even in the Swatantra Kriya program, we start with belly breathing. So even in Tridosha balancing, Shwas ko Shuddhi, I advise people to start with belly breathing. इसीलिए जब से शुरू से जब से ग्रुप एक्टिव हुआ है for this new program,
मैं बार 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 बेली ब्रीदिंग की वीडियो शेयर कर रहा हूँ. Some people joined early, some people joined late, but I kept asking, please start belly breathing. Your belly breathing should become your default breath. यानी कि वो आपका normal breath हो जाना चाहिए. You can do belly breathing anytime. Belly breathing वही तरीका है जो नया बच्चा पैदा जब होता है, और नया बच्चा when it's lying in bed, you will notice कि उसका पेट अपने आप ऊपर नीचे होता है. मैंने इसके बारे में वीडियो शेयर कर दिया, तो इसलिए आई विल नॉट स्पेंड टाइम ऑन बेली ब्रीदिंग, अन्यथा काफी समय इसमें व्यर्थ जाएगा. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द श्वास को शुद्धि क्रिया, विच इज हफिंग टेक्निक. पेट को एकदम रिलैक्स रखिए, पूरा फुल डीप ब्रेथ लीजिए, और जब पूरी सांस आपने ले ली तो मुंह को खोल के जितना खोल सकते ऐसे आवाज, ऐसे सांस निकालिए. पूरी सांस ले लीजिए और फिर मुंह पूरा खोल के इसको हफिंग टेक्निक का शुरुआत कह रहे हैं. विधि, वृद्धि जी, हाँ बोलिए. वृद्धि जी बोलिए. हाँ जी सर, जो हम एक्सेल कर रहे हैं दैट शुड बी शॉर्टर, जैसे हमने इनहेल नहीं किया. नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट वृद्धि जी, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं ना हम. अभी हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग द श्वास को शुद्धि क्रिया. अब वो एक्सेल की बात एक बार छोड़ दीजिए, वो आपने नोट कर लिया, लेट इट बी. वो अलग चीज है. ये नहीं अपने नहीं, योग अभी का ही प्राण. बोल रही हूँ सर, अभी का ही बोल रही हूँ. जो अच्छा, आप हाँ. हाफ करके हम्म, जो हम लोग साउंड छोड़ते हैं, तो एक तो हा लॉन्गर भी हो सकता है. नहीं, इसमें लॉन्गर शॉर्टर की बात नहीं है. इसमें आपको जितनी ज्यादा, अधिक से अधिक मात्रा में वायु छोड़नी है, ओके अधिक से अधिक मात्रा में आपको श्वास बाहर निकालना है. ओके. ठीक है. जब पूरी सांस निकल जाएगी, एक सेकंड रुक जाइए, अभी बता रहा हूं, आई एम एक्सप्लेनिंग दैट. तो आपने पूरी सांस ली, पूरी सांस ली, और मुंह मुंह मुंह- आपने पूरी सांस ली, और फिर मुंह खोल के, पूरा मुंह खोल के जितनी सांस छोड़ सकते छोड़िए. स्पीड इज नॉट इंपॉर्टेंट. कितना 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 देर करते हैं या कितना शॉर्ट करते हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. कितना पूरा छोड़ते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो जितना छोड़ सके छोड़ दीजिए. छोड़ने के बाद में रुकिए, सांस लिए बिना फिर से छोड़िए. मैं आपको दिखाता हूं. मैंने पूरी सांस ली, अब मैं सांस ले रहा नहीं हूं, वेट कर रहा हूं. अभी भी नहीं ले रहा हूं. अभी फिर से दे. तो बिना सांस लिए मैंने 3 बार 4 बार करके सांस बाहर निकाली. समझे आप? मैंने पहले सांस छोड़ी, सांस पूरी निकल के मैं रुक गया. मैंने आई डिडंट ब्रीथ अगेन. आई वेटेड अ मोमेंट. Without breathing, I did the exhale once again with the mouth open. Then again, I waited a moment, and again I repeated that 3 4 times. किसी से एक बार होगा, किसी से 2 बार होगा, किसी से 3 बार होगा, किसी से 6 बार भी हो सकता है, I don't know. But every time you do, try to exhale as much air as you can. Please try on your own, as long as your body is comfortable. If your body feels uncomfortable, please wait. Don't repeat for a while. Please do it again and then tell me how many times were you able to do it. Full breath in and one, waiting a moment without breathing. Second, no breathing. Three, no breathing. Four, in breath. So I'm able to do about 4 times. Sometimes maybe a little more, sometimes maybe a little less.
आप करिए एंड ऑब्जर्व करिए. सर आई डिड इट 5 times. 5 times. वेरी गुड. मैं वेरी एकदम गुड. ब्रेसलेस हो गई. एकदम ठीक है. वेरी गुड. नो प्रॉब्लम. 5 times बबीता जी. Three, आर के वेल 5 2 three, 3 times, sir. 3 times. Doesn't matter. Very good. Sir, I'm ये experiencing coughing also while doing it. यस वेरी गुड. किसी को यदि कफ की वो आ रहा है ना, कॉफिंग का टेंडेंसी हो रहा है, सो देन व्हाट यू शुड डू इज कीप अ कंटेनर लाइक दिस और अ बोल. उसमें कॉटन लगा लीजिए या टिश्यू पेपर लगा दीजिए. और यदि कफ निकलता है, यदि इफ यू फील द कफ इन योर थ्रोट, करके थोड़ा सा निकाल दीजिए. आर यू क्लियर? ये कफ यहाँ पे यू आर फीलिंग समथिंग. क्लियर योर थ्रोट and if you have a container you can throw it into the container. Please do it once again. Take a full deep breath and then go full out exhale. Wait a moment. Again full exhale. Wait. Repeat. Wait. Again without breathing in. 4 5 times, as many as possible. और देखिए किसको कफ निकल रहा है. Some of you will notice that you are expelling a little bit of phlegm or maybe sometimes even a lot of phlegm. Please turn on your video so I can see what you are doing, because खाली 10 5 लोगों ने 15 1 लोगों ने चला के रखा है, otherwise everyone else is shut. Observe. किसी का कफ निकल रहा है तो tell me. If Buttercups जी, you are expelling phlegm. Very good. कितना निकल रहा है Yes, आपका? sir. Lot of cough. You can Lot see of my cough. face. It's red now. Very good. Very सर good. 4 times हुआ है लेकिन जी. काशी आ रहा है. खांसी आ रहा है तो कफ निकालिए. डू दिस. ऐसे करिए और कफ निकालिए. और किसका कफ निकल रहा है? Sir, I think in my case it's a dry cough. Nothing is coming out. ना, ये जो ड्राई कफ का जो कॉन्सेप्ट है, पीपल से इट ऑल द टाइम, बट आई लुक एट इट अ लिटिल डिफरेंटली. यदि इफ द बॉडी इज ट्राइंग टू कफ, इट मींस लंग्स में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एयरवेज में there is something which the body is trying to expel. That is why we get this reflex of trying to cough. So if this cough is happening, it is a sign कि अभी नहीं निकलेगा, बाद में निकलेगा, but निकलेगा. Sometimes जो phlegm होता है in the body, sometimes the phlegm that we experience in our system is old. It may be a little dry. It may be a little hard to bring out, but it has to be brought out over time. Some of the phlegm or mucus is watery or not very thick. It comes out a little more easily. The lungs, the size of the lungs is very, very large. The lungs, actually, if you open up the lungs, the folds of the lungs, it is estimated to be the size of a tennis court. That's a huge area. That is the amount of surface area that our lungs have. इतना बड़ा उसमें वो है space. कहाँ पे क्या अटका हुआ है, we don't know. So therefore, when we start doing this, it starts moving. Number one. Number two, a lot of stale air is collected in our lungs. आप notice करोगे कभी कभी, some people have a lot of bad breath. आपने notice किया? Some people have a lot of bad breath. Have you noticed? हाँ ना, बताएं मुझे, है ना? Some people have a lot of bad breath Yes, yes, because there is yes. a lot of stale air in their lungs. Also, it could be other reasons, but also because there is a lot of stale air in their lungs, so they get bad breath. So if they are able to change the air, इस तरह से करके और दूसरे टेक्निक से आप जितना उसको एक्सचेंज कर पाओगे, you will see an improvement. सर कभी कभी मॉर्निंग में जैसे मैं उठती हूँ तो मुझे ना वॉमिटिंग सा मैक्सिमम मॉर्निंग वो म्यूकस सा निकलता है. हाँ, तो because your body is trying to throw out as much phlegm as it can naturally. अब जो भी आप कर रहे हो, अभी के जो टेक्निक सीखोगे इससे और ज्यादा निकलेगा. चलिए फिर से Okay. करिए. चलिए, रिलैक्स योर बॉडी. पेट को रिलैक्स करिए. टेक अ फुल डीप ब्रेथ एंड देन गो
once, wait a moment, repeat. 2, repeat. Again. And then breathe in. Listen to your body. If your body is comfortable doing it, do it more. If you're able to add a little more pressure, add a little pressure. If you're not able to add too much pressure, that's okay. धीरे धीरे you can increase the amount of pressure that you put on your system. सर वही अभी भी जैसा वही हो रहा है, जी म्यूकस ही निकल रहा है। निकल रहा तो अच्छा है, तो निकालिए, ठीक है। जितना निकलता है निकालिए. I keep a container like this and I throw it in ओके that. अब तो मेरा बहुत कम हो गया कफ, पहले तो बहुत ज्यादा होता था, भर जाता था, आधा आधा भर जाता था ये डब्बा. सर, उसके बाद वाली वीकनेस सी हो जाती है फिर। वीकनेस इसलिए हो रही है बिकॉज खांसी आ रही है ना, खांसी आ रही है, एक बार निकलेगा तो एक बार वीकनेस होएगा, फिर से आ जाएगी एनर्जी. बट कफ कफ आपके अंदर रहेगा तो और ज्यादा वीकनेस होएगी, तो इट हैज टू बी ठीक। टेकन आउट. जी सर ये हाँ, क्रिया कितना टाइम करना वेरी गुड, चाहिए? परफेक्ट परफेक्ट क्वेश्चन. ये जो अभी जो सिखाया, ये 5 बार करिए. मैंने एक बार जो किया, रिपीट एक्सहेल, रिपीट हफिंग, 3 बार 4 बार, ऐसे 5 रेपिटेशंस कर लीजिए. 5 रेपिटेशंस ऑफ दिस इज गुड इनफ. अभी आप लोग करिए, 5 बार कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट बताता हूं कैसे करना है. इसके 2 हिस्से और हैं. ये पहला हिस्सा था, इसके 2 other elements are there which I will explain. A question connected to this, sir. हेलो, मैंने क्या अभी बोलिए? किया तो 6 टाइम हुआ मेरे को. 6 टाइम में किया ना तो आई हाँ. फेल्ट a pull in my head. So जैसे listen to your body. Any discomfort, slow down. ये गलत खत्म आ रहा Any discomfort, any problem, slow down. Okay, sir. Thank you. Please unmute only when you wish to speak. Otherwise, keep your systems muted so that disturbance नहीं हो दूसरों को. Sir, how many times to be done in a day? क्वेश्चन. ये सुबह एक बार खाली पेट में कर लीजिए, और यदि अधिक कफ है तो शाम को अगेन खाली पेट में, जितना खाने के 3-4 घंटे बाद में. Sir, the tongue should be kept inside or outside? You can do both. You can also bring out the tongue and do the huffing. Okay, If you are thank able to bring out the tongue, you will be able to expel a little more phlegm. Okay, okay. Thank you, sir. Anybody else? किसी और का कफ निकल रहा है, बताएं मुझे. Turn on your video, share with me what are you experiencing with this. कृपया बताएं. Feedback is important. You know, I need to know what you are doing, how it is affecting you. You need to share ना. सबने तो वीडियोस बंद करके रखे हुए हैं. ऐसे थोड़ी सर, होता है. इट्स अ नाइस प्रैक्टिस. सॉरी. So it is a nice practice It is a for releasing cough and all. It is a nice practice, good practice. nice practice. नहीं, आपका कितना निकला कफ, कितना कफ निकला आपका? सर, मैंने कफ तो नहीं निकला मेरा, but अच्छा, I can तो feel that it's a good practice in Okay. releasing cough and all. ओके ओके, वेरी गुड. करिए. और किसका कफ निकल रहा है मुझे वो जानना है. Who is able to throw out phlegm? Sir, and I'm हाँ. feeling very light right now. You're feeling light already. Okay, very good. Very good. Buttercups ji. Anyone Sir, else? Yeah, Shama ji, yes. for me, हाँ, the जी. kapha is like it is thick, like noodles. Okay, very good. So it come out thick in very pinch. If it come out, also it's like very little. doesn't matter. It is coming out. That is the important thing. And as you go deeper into this, you will be able to throw out even more phlegm. Yes, Shama ji. हाँ, मेरे को हंसी आ रही थी. The जी. moment I joined this thing and you start explaining, मेरा तो जी. माइंड ट्यून हो जाता है. तो मेरा तो और कफ का वो थोड़ा टेंडेंसी जो है before this thing. But अभी मैंने नोटिस करी, I had not noticed before that you said कि inhale, exhale. One second. I'll mute everybody. 1 second. Sorry, so sorry. Too much disturbance. हाँ श्यामा जी, फिर से अनम्यूट करिए, फिर बोलिए. अनम्यूट.
मैंने नोटिस किया कि आपने जी बोला कि पूरा एक्सेल करके तब देन वेट एंड देन यू कॉफ. exhale again. Yeah. Otherwise, what I was doing was थोड़ा सा एक्सेल कर दिया and then I was doing. So Okay. that, we have to understand this very well because that was very Yes. easy. Yes, But that is easy. But to when you exhale really, when you exhale fully, that हाँ, means you are doing a greater air exchange, number one, or you are expelling old stale air. And when you do that, a lot of old phlegm, etc., in some part of the lungs also starts to move. So when it it did come, starts to move, definitely came, जी and but then I started doing this कि पूरा exhale जी किया, then जी waited. तो पहले तो 5 बार बड़े आराम से हो रहा था, अभी okay 3 बार जी right right 3 बार हो पाया so है. the idea is not to do many repeats, the idea is to do it effectively, throw out as much air as possible and then do it. Very good. Right. Sir, why am I feeling wet in my upper chest area? Especially it started in the morning. Why? Because I'm not very clear about your question. Sir, it is to be done only once, or we can do it twice in a day? You can do it twice, but do it on an empty stomach because a little pressure is used. I'm going to go deeper. You will understand why I'm saying that. Right. Thank you. Yes, somebody is saying why I'm feeling wet in my upper chest area. I don't know what that means. I can't see the name for some reason. Sir, it's me, Babita. Babita ji, okay. So, especially started morning 4 a.m. White mucus forming in the upper chest area, and again it forced me to take inhaler. See, if you are taking inhalers, I'm not a doctor. I will not give doctor's advice. If your doctor has asked you to take, it is your choice. Continue to do it. But as you learn the techniques that I'm sharing with you, and as you learn to practice them, I am sure that your dependence on inhalers will come down significantly. And one good reason I'm giving is I do a I do a thing called Lakes Initiative in Kolkata in the lakes area. I teach some of these techniques to poor people that nobody pays attention to. Nobody focuses on them, nobody helps them, and so on. So I share some of these breathwork techniques with some of them because they used to ask me to buy them medicines earlier. So when I started buying medicines for them, some of them used to ask for inhalers. So I knew that they were having breathing difficulties, and therefore I started teaching them some of these techniques. So there is an elderly lady over there, elderly woman, maybe about 70-ish, I guess, who uses, even now she uses, but her use of inhaler has come down significantly. Earlier she needed to use it 4 or 5 times in a day. Now she says she has to use it only once a day. And I'm sure if she continues with this, after a few days, she will not even need to use it. So you will also notice that it has come down. Ajit ji says, my father-in-law expired due to COPD. Multiple clots in lungs. Will these exercise? Ajit ji, I had COPD also. And it's, I don't know whether it's cured because I've not had the examination done from that aspect, but I breathe much better today than I did even 30 years ago. At Okay, half my great. age, whatever my quality of breathing was, today at 67, I'm breathing much better. Okay, great. Yeah. So, So may I say something? जी बोलिए जी रश्मि जी बोलिए सर एक शेयरिंग करना है मुझे. मैंने आपके वीडियोस देख के काफी ट्राई किया. द फर्स्ट डे माय बीपी शूट अप. आवाज क्लियर नहीं आ आपने रही है बोला रश्मि जी. Your voice is not clear. I think you're not using a Bluetooth device, so the voice is not very आई clear. एम यूजिंग इट सर. Okay, so some एक्चुअली reason. माय या Okay, say it again. when I started, I heard your video and started doing the huffing thing. The first day my BP it went up. काफी शूट अप हो गया था. Then I had talked to you and फिर वो वापस देख के मैंने किया. तो इनहेलर जो डेली लेती थी उसको स्किप हो गया. एक दिन स्किप हो गया, सेकंड डे लेना पड़ता था. Seeing this, my husband told कि भैया अगर कोई चीज से अगर इनहेलर स्किप भी हो रहा है, that is a very positive sign. Exactly. So my husband Exactly. told you do this course. Exactly. Very good. Good choice. So So
इससे like I फर्क said, पड़ रहा है हाँ, तो I remember that conversation I had with you then. तो मैंने आपको बताया कि आपने बेली ब्रीदिंग तो शुरू नहीं करी और आप इसके डीप में जा रहे हो. सो देयरफॉर योर सी व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू डू दीज टेक्निक्स, more vasoconstriction happens. I we induce vasoconstriction in this part of the program so that we are able to squeeze out any phlegm that is collected in our respiratory system. So I have no problem with that. But if you do belly breathing, your vasoconstriction will not affect you so negatively. Your BP will not rise up. Therefore, all from the beginning, I've said repeatedly, please do your belly breathing, do your belly breathing. And I kept asking. Some people answered me. Most people did not answer me, but that's okay. Part of the program, I guess. Anyway, so once again, be clear what to do. Now, the second part. So, this is the first part of the huffing technique of Shwasko Shuddhi Kriya. Now we come to the second part of the huffing technique, where as you do the huffing, you will, with your mind, with your inner muscles, create a little squeeze. First, you will do the squeeze in the lower belly area. You will do the squeeze here, and then you will do a squeeze slightly higher, and then you will do a squeeze slightly higher, and so on. So just internally, you will add a squeeze into your system as you do the huffing. You will not be able to see what I'm doing, but I'll try to explain anyway. So, my belly is relaxed, belly breathing is happening. I take a slow, full, deep breath. And now, as I'm going to exhale, I'm going to do a inner squeeze. Relax. Again, exhale with a squeeze. Relax. Again, exhale with a squeeze. And one more time. Breathe in. Now, as you do this squeezing, listen to your body. If your body is not comfortable, slow it. Take it easy. I can do a lot of pressure because my body is accepting it. You start gently, slowly add to the pressure over time. सर Please do इसमें it. स्क्वीज जो जी जी स्क्वीज करना है वो जी एक्सेल के बाद करना है, एक्सेल के बाद नहीं, एक्सेल के साथ. एक्सेल के साथ करना है. जी एक्सेल के साथ जेंटली करिए. डू एज मच एज योर बॉडी इज कंफर्टेबल विद. ठीक है. आराम से सुनिए, आराम से करिए. Younger people can do a stronger exhale or a stronger squeeze. Slightly older, थोड़ा धीरे. ज्यादा ओल्ड है तो listen to your body. देखिए एक बार करिए. If your body is happy with it, do a similar. फिर थोड़ा सा add, increase a little pressure if your body is able to accept it, and then slowly over time increase the intensity. This way you will be able to get better results. Yeah, please do it on your own. I need to see you. Please turn on your videos and let me see what you are doing. Otherwise, how do I know what you are doing? Turn on your videos, please, everyone. Chali, please turn on your videos and show me what you are doing. Otherwise, this is like a classroom with everybody sitting as a backbencher. What backbenchers do, nobody can tell. Please turn on your videos. Exhale with the huff and do the squeeze. राजेश जी मैंने इनफ कर लिया. आई एम द ओल्डर वन में 80 प्लस. Okay, yeah. आई एम नॉट डूइंग Listen. एनी मोर, इसलिए मैं वीडियो Okay. बंद कर रखा. Okay, all right. Ji. Listen to your body. Do as much as your body permits, and then add a little more. Jitna accept kiya body ne, add a little to it. Body is not happy, slow down again. Body is happy, do a little more. Turn on your videos, please, everyone. Please turn on your videos. Except Shamaji. She said she won't because she's done it now. Come on, everyone. Please turn on your videos. I need to see you, Ji. आप लोग शर्मा शर्मा के बैठोगे तो कैसे होगा ऐसे? I need to see what you are doing now.
Very good. Very good. Who is able to expel phlegm? किसका कफ निकल रहा? किसका निकल रहा है फ्लेम? हाँ, भावना जी का निकला ना, बहुत अच्छा. वेरी गुड. वेरी गुड. जोर से निकला. बटरकप जी का भी निकला. वेरी गुड. राजवंत कौर जी का भी निकला फ्लेम. वेरी गुड. Anybody else? Come on, tell me who else is expelling phlegm. अपना हाथ ऊपर कर दीजिए या टेल मी. Vidhi ji had food थोड़ा देर पहले. So yeah, that's okay. If you had food a little while ago, don't use too much pressure. That's okay. If you are expelling phlegm, put your hand up so I can see who all are getting the hands up. Come on, come on. Feedback is important. I need to know who's doing what. What are the results you are experiencing? Come on, tell me, tell me. एक दो लोग तो बोले किसका हो रहा है अच्छे से expel. Who's seeing a lot of phlegm coming out? रश्मि जी, आपका निकल रहा है phlegm? हाँ रश्मि जी. Please don't wait for me to ask. No? You must respond. सर मेरा निकल रहा है पर ज्यादा नहीं. ज्यादा नहीं निकल रहा. Doesn't matter. जितना निकला बहुत अच्छा. किसी किसी का तो काफी ज्यादा सर निकल रहा मेरा है. निकला पर सिर भारी हो रहा है. सर भारी हो रहा है. एक बार भारी होगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा. ठीक है. सर वेरी गुड. मेरा फल तो नहीं निकल रहा पर वो जी. बर्ब्स आ रहे हैं. बर्ब्स भी है. हाँ, वो भी होएगा. वो भी माने बात में भी थोड़ा सा आराम मिल रहा है आपको. हाँ बात में. हाँ. Nay, doesn't matter, Pinky ji. If nothing is happening, doesn't matter. Maybe your cough is not too much, in the upper part of your system. Maybe it's somewhere in the lower lungs or whatever, and maybe it will come out later. करते रहिए. Somebody is susceptible to bronchitis. Who's this? It's me, sir, Ajit. Ajit, susceptible to bronchitis. Yeah, so continue doing this. It'll help you. Right. Okay. As of now, I have no How many issues. times? Okay, no worries. How Ajit, many sorry. times have you done? Same ये like कितनी बार before. करना है? जैसे पहले अच्छा 5 बार पहले. करने का, 5 repetitions. So हाँ. each exhale, wait, squeeze again, exhale and squeeze, wait, exhale and squeeze. So that is one. 3-4 बार कर लिया, that is one repetition. Then again take a full breath, exhale, squeeze, exhale, squeeze, exhale, squeeze. Number 2. Again, take a full breath, exhale, squeeze, exhale, squeeze, exhale, squeeze. Very good. Continue doing that. Bhavna ji, lots of cough coming out. Very good, Bhavna ji. Excellent. जितना सर निकलेगा उतना उसी अच्छा का है. हाँ जी. सर उसी में मॉडिफिकेशन है आप अलग से कर. आवाज क्लियर नहीं. आवाज कट रही है. आवाज कट रही है. सॉरी. उसी का मॉडिफिकेशन है कि कंबाइन स्क्वीज करना है कि यस. अलग से करना है? नहीं, आपने शुरू में जो किया वो खाली बॉडी को ये हफिंग टेक्निक से कंफर्टेबल करने के लिए किया. सो नाउ योर बॉडी इज गेटिंग इनटू द रिदम दैट आई कैन डू द कफिंग नाउ, द हफिंग. सो हफिंग करने के बाद में 5 बार कर लिया, रिपीट कर लिया. नाउ यू विल डू विद द स्क्वीजेस 5 टाइम्स. 5 repetitions सबने कर लिए. हैव यू ऑल डन 5 टाइम्स? रिपीट द हफ विद द स्क्वीज, 5 sets. Have you done it, everybody? Yes or no? आप लोग रिस्पॉन्ड तो करो ना. Yes, sir. Yes, Yes. yes, sir. हाँ, okay, Yes, very sir. good. Yes, Right. sir. Excellent. Very good. Now, third part of this technique is, again, take a slow, full, deep breath. Keep your belly relaxed. And now when you do the huffing and you expel the air, bring your attention to the tailbone. Your first exhale will be a squeeze along the back near the tailbone area, followed by slightly higher from the tailbone, followed by slightly higher. तो लाइक जो मसाज एक्शन जैसा होता है ना, इंटरनल, अंदर से आप जैसे मसाज करके ऊपर ले जा रहे हो. Allow that kind of movement to happen in your squeeze as you exhale and
do the squeeze. Take a slow, full, deep breath. And then as you exhale one time, bring your attention to the tailbone along the back and do the squeeze there. Full exhale. Wait a moment. Now take your squeeze from the tailbone to a higher point. You can do tailbone plus that. Similarly, in the third one, tailbone a little higher, maybe middle back. And then take it all the way up. Breathe. सर और एक बार एक्सप्लेन कीजिए, पता नहीं जी चला। खत्म जी। तो अभी जैसे आप the earlier time what you did was just exhale, exhale, exhale. The second 5 sets you did with the squeezing along the front of your body. In the third part, you do with the exhaling along the back of your body. How do you do it? The first exhale is near the lower back. Lower back, tailbone की तरफ में आपने squeeze किया. Second squeeze is tailbone and slightly higher than that. Third squeeze is tailbone, middle back, higher back, or middle back, or lower back, middle back, followed by slightly higher. So 3-4 बार में it's almost like internally आपने पूरे along the back you've done the squeeze. Why? Now you might We want to have know to. why. One second. Sorry. You might want to know why. Your Yes, sushumna, your हैं sushumna. पप्पा ने चल जाओ जल्दी Please keep, तो तेरे को please खुद keep. खड़ा हुआ अरे ये मिस्टर सैमसंग अपना आप अच्छा म्यूट करके रखिए, आप अनम्यूट करते हो फिर डिस्टर्ब होता है बहुत. Unmute only when you need to speak. Mr. Samsung, this is happening with your connection mostly. Yeah. So as you do the squeezes up along the spine, you don't realize it, but the action is happening along your sushumna. आपको अभी नहीं समझ में आएगा. When we start doing the Hanuman master breath, then you will understand. As Sir, you do these, अरे आप बात सुनो ना यार. As you do these squeezes along the back, whether you realize it or not, the action is happening along your sushumna. Your sushumna is your single most important nadi in the system. It is similar to what is in English called the vagus nerve. So allow this to happen. Let the cleansing happen. Do it again. Take a slow, full, deep breath. If anybody wishes to speak, please raise your hand first. Don't just jump in. If you keep jumping in, it disturbs my flow of thought. I will not be able to express what I need to express. Then I'll get lost in something else. Not your fault, my fault, but please wait for your turn to say something. Just raise your hand. So for now, take a slow, full, deep breath and do the exhale with the huff along the back, squeeze along the back. Lower back, slightly higher, all together. Yes, Mr. R.K. Wellness, बोलिए. Sir, it would be appreciated if you can give the demonstration of this How can I technique. demonstrate this? How can I demonstrate? It is an internal Sir, process. Sir, It is an because internal process. the previous one you shown me like doing the huffing the technique. So because this we have to squeeze our stomach, then we have to squeeze our Exactly. this Along the back, जैसे आपने सामने lungs, में then chest. just one second, RK, one second. Just as you were doing the squeezes along the front, which I showed you how, lower back, middle, lower belly, middle belly, upper chest. So just do similarly along the back. That's all. Okay, so this one, because as you told, like now we have to take a breath from this belly, then we have to squeeze and focus on this our tailbone. No. Is I it don't it? know where. No. Sir, I can you said repeat it, please? that's what I'm doing. सुनिए RK जी, थोड़ा relax करिए, chill. Take a slow, full, deep breath. We started with belly breathing. So I want you to be in the belly breathing state. Belly breathing state hai, that means your system is very relaxed. So allow the belly breathing state. Take a slow, full, deep breath. And then when you do the first exhale, bring your attention along the back. Do an inner squeeze in the lower part of your back near the tailbone area. Then wait a moment. Then do the squeeze from
from the tailbone area to a slightly higher area, then from the tailbone slightly higher to still more higher, as if internally you are doing a massage action along your back, as if you're doing a massage action along your back. I hope this is clear, RK Wellness ji. Okay, yeah, please do it again. Do it, yeah, deeper squeeze right now. But listen to your body. As long as much as your body is comfortable, as far as your body is comfortable, allow that. And as you continue doing this, notice whether your body wants to expel the phlegm. If you wish to expel the phlegm, one of the things will be you'll get a coughing sensation. Cough, cough karne ka man karega. Then you will feel something in your throat area. If there is something, do clear it like this and then out into the container. Do it again. Please repeat this also 5 times. Take a full breath and 3, 4 exhales and squeezes, one set, followed by another 3, 4 exhales and squeezes, second set, followed by a third one and a fourth one, and then a fifth one. करिए सब कोई करिए. Please do it. Don't wait. I can't see everybody, so I don't even know what you are doing and what you are not doing. And I keep repeating, please turn on your videos, but आप लोग सुनोगे नहीं तो कैसे होगा? मुझसे शर्माओगे तो I'm your teacher at the moment. How will it help to be shy of me? Don't be shy. सर थोड़ा पानी पी सकते हैं? हाँ हाँ, पी लीजिए पानी, हल्का हल्का पीजिए, no problem. Sir, I have completed 5 sets. You completed 5 sets. कफ निकला, कुछ फ्लेम निकला? Yeah. निकला नहीं, फ्लेम? फ्लेम तो नहीं निकला, पर बर्फ आ रहे हैं. नहीं, फ्लेम निकलेगा, पक्का निकलेगा फ्लेम अभी. अच्छा, one more thing that you must do. As you are continuing to do this, some of the phlegm will tend to move up along the sushumna and it will collect in the throat area. So please gargle. Ideally, yes. एक सेकंड राजन जी, सुन लीजिए पहले. Ideally, to gargle, use warm water with tea. चाय, टी बैग होता है ना, ब्लैक टी या ग्रीन टी, both are okay. You can make a little tea with a tea bag, because if you put patta in it, that patta is not good, or you'll have to strain the patta. So tea bag is easy, it's convenient. Add a little bit of salt as well. Warm water, warm enough, not very coolish warm, but a little warmish or hottish warm that your body can accept. It shouldn't be so hot that you burn your mouth or hurt your throat or something. So warm enough, but not extremely warm. Add some salt. You can also add a little bit of turmeric or haldi and gargle with that. Very good. Any questions so far? हाँ, सर राजवंत जी. हाँ सर, इन्फ्लेमेशन अब खुद ब खुद ही आ रही है बाहर, वाटरीज. हाँ, निकल रही है ना, तो निकालिए, अच्छी बात है. जितना आपका फ्लेम निकलेगा उतनी आपकी ब्रीदिंग आराम होगी. Who is feeling an improvement in the इसका breath? स्टोमक के साथ कोई रिलेशन है, जिसे स्टोमक में एसिडिटी वगैरह होती है? वो भी बाद में बात करेंगे, अभी एक साथ ज्यादा कवर नहीं करेंगे. ओके. अभी who is feeling an improvement in the quality of the breath with just this much? किसको फर्क पड़ा सांस में? बटरकप जी, वेरी गुड. बटरकप जी, anyone else? अजीत जी, very good. Anybody else noticing an improvement? Okay, Murugan ji, very good, excellent. Yeah. So this is the first part of the Shvasko Shuddhi Kriya, which is 3 different types of exhalation or huffing. Tomorrow, before our session, ideally do this in the morning. Also in the morning, gargle the way I explained to you. Belly breathing कर रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है. Belly breathing नहीं कर रहे हैं तो please do it. I have shared the belly breathing video in the group. I will share it again today. Hopefully I will remember. If I don't remember, somebody can ask me again. I will put it there. So do the belly breathing and then continue with these techniques. The more your body is in the belly breathing mode, the more your body will be able to handle the stress of all this squeezing. जैसे रश्मि जी ने बोला, the first time she tried it, her blood pressure went up.
And the reason her blood pressure went up was because she was not doing belly breathing. After she started doing the belly breathing, etc., there was no such thing that she noticed, or at least she did not tell me that there was any belly blood or BP problem. Rashmi ji is here. She can confirm or whatever. Is that right, Rashmi ji? Yes, sir. Okay, very good. Sir, in fact, I wanted to add it, कि मेरे को लग रहा है कि आप जो बोल रहे हैं इसमें वेजो नर्व खुलती है, तो बिकॉज ऑफ दिस हफिंग टेक्निक वो फ्लो बढ़ा है, तो उसके कारण ऑल my BP shot up because very breathing I do breathing. No, the BP shot up because vasoconstriction happened. हम जो squeezing करते हैं, huffing करते हैं, तो इसमें squeezing होती है because we are putting pressure. So इसके कारण से जो squeezing होती है, एक बार BP will go up, एक बार later it will come down. But यदि if somebody checks and they find the BP has suddenly gone up, उनको थोड़ी चिंता हो सकती है, जैसे रश्मि जी को हुई. So Harsha ji, now your kapha is coming out. Okay, very good. Earlier you were not getting it, now it's coming out, right? I think earlier you said it wasn't happening. Is that right, Harsha ji? Yes. Okay, very good. किसका निकल रहा है अच्छे से कफ? जोर का कफ किसका निकल रहा है? हाँ, किसका निकल रहा है जोर से कफ? Sir, mine. Very good. Mine is Buttercups ji. Very good. हाँ. So Buttercups ji, continue doing this. Buttercups ji, can I call you by another name or Buttercups is okay? Yeah, it's okay, sir. Buttercups is okay. Okay. Yeah. Okay. Yes. Very good. So belly breathing, followed by this. This is your homework for tomorrow morning. We will meet again at 6 p.m. in the evening and we will take this deeper. Any questions so far? Anybody? किसी को कोई भी प्रश्न है, कोई भी समझना है, कोई भी क्वेश्चन है तो पूछे अभी. सर जी दीप्ति जी. सर अगर हम डायरेक्टली थर्ड टेक्निक से स्टार्ट करते हैं, अगर हम पहले दो इजीली कर पा रहे हैं तो सीधे थर्ड टेक्निक को 5 टाइम्स करना इज इनफ? यदि आपके बॉडी में अधिक कफ नहीं है. जी नहीं है, मुझे नहीं आया अच्छा, कफ. नहीं, 1 सेकेंड. वंस यू हैव मास्क, सी पहले दिन सबको नहीं निकलता क्योंकि कईयों के लोअर लंग्स में होता है कफ. पुराना कफ है, लोअर लंग्स में पड़ा हुआ है. यू विल नॉट नोटिस इट नाउ, बट आफ्टर सम टाइम यू विल बिगिन टू सी नहीं नहीं कफ तो निकल रहा. सो प्लीज, since you are starting a new thing, new course, understand it well, do it fully to get the best results. आप यदि शॉर्टकट्स खोजोगे तो ठीक है, मे बी इट विल वर्क, मे बी इट वोंट वर्क. इफ इट डजंट वर्क तो आप मेरे ऊपर बंदूक लेके गोली छोड़ोगे फिर, तो वो तो उचित सर नहीं ये होएगा. तो कॉफ एक्सपेल करने की टेक्निक है सर, कॉफ रिडक्शन नहीं हो सकता है? मैंने क्या बताया आपको कि पहले 3 दिन अपना फोकस इज ऑन टेकिंग आउट द कफ. उसके बाद वाला जो एडवांस्ड कोर्स है उसमें वी आर फोकसिंग ऑन द टेक्निक्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फ्लेम इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम. वेरी पावरफुल. मेरा माय बॉडी वाज अ कफ फैक्ट्री. बिलीव मी, इट यूज्ड टू बी अ कफ फैक्ट्री. अभी एवरी मॉर्निंग जब तक मैं गार्गल नहीं करता मेरे मेरे गले से आवाज नहीं निकलती थी. And nowadays, for days, I go on without gargling, no problem, at least no major problem. And then सर वेरी I'm ट्रिमेंडस. एक second, doctor साहब, एक second. And then there are days when I do those things which cause me too much cough. For example, डाब का पानी पीने से कफ बढ़ता है. डाब का पानी भी पीता हूँ, ठंडा पानी भी पीता हूँ, ठंडा पानी सॉरी ठंडा दूध भी पीता हूँ, आइसक्रीम भी खाता हूँ. So I am doing all these things, and कभी कभी ठंडी बियर भी पी लेता हूँ. So I am doing all these things, but my kapha is not becoming a problem because the technique is so powerful, especially the Tridosha techniques which are done in the advanced course. आपका कफ का रिडक्शन इतना हो जाएगा, यू विल बी अमेज्ड. मुझे तो खुद पे इतना आश्चर्य होता है कि इतना मेरा बॉडी कफ बनाता था, एंड नाउ ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कफ, इवन दो आई एम डूइंग थिंग्स दैट आर नॉट गुड फॉर माय कफ दोष. सॉरी डॉक्टर साहब, बताएं. सॉरी सर मैं ये कह रहा था कि आप में तो मैंने बड़ा ट्रिमेंडस चेंजेस देखे हैं जी. आप जब स्टार्ट किया था, आज में काफी चेंजेस है. मेरा इश्यू ये है सर, जैसे अपने
हफिंग टैंकिंग करते मेरा जो विट्रस डिटेचमेंट हुआ है आईज में, हाँ हाँ हाँ, तो रेटिना उसमें डिटैचमेंट। और हाँ विट्रस डिटेचमेंट है मतलब। क्या एक पहले डिटैचमेंट, सॉरी? रेटिनल डिटेचमेंट हुआ था, उसका तो लेजर हुआ है, पर तो ओके, विट्रस डिटेचमेंट तो है वो। पर तो अच्छा जो उसमें फोर्स नहीं कर सकते, तो उसके अच्छा, अल्टरनेट मैं क्या है? तरीका बताऊं, नहीं मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो ठीक है, आई गुलाब विल सिंह कॉल जी, यू। डॉक्टर साहब, नहीं वन सेकेंड, लकीली आपकी आवाज में मुझे बहुत अधिक कफ का फीलिंग नहीं हो रहा। नहीं मेरे सो हाँ, पिता मतलब मेरा पित्त बढ़ा प्रधान हुआ। है, पित्त प्रधान तो है, नो मेरा प्रॉब्लम। जो है ना, अ, मेरा सारे सब पैरामीटर्स नॉर्मल आ रहे हैं। जी, एक मेरा पेनक्रियाटिक, आई विल डिस्कस पर्सनली। तो अभी जो भी प्रोग्राम का डिटेल में अब डीप में जाएंगे, like we were discussing earlier, you will feel a difference in your vascular health. उस पे करेंगे, अभी और बात करेंगे उसके बारे में आगे। ठीक, दिस विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट। कफ पे तो है ही डायरेक्ट इम्पैक्ट। हाउ मेनी ऑफ यू हियर, यहाँ पे कोई वात और पित्त वाले भी हैं क्या? जैसे डॉक्टर साहब हैं पित्त वाले, डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू करिएगा प्रोग्राम और ऑब्जर्व करिएगा क्या फर्क आता है। एनीबडी एल्स फ्रॉम पित्त एंड वात दोषा, एनीबडी? बात अनामिका, तो फिर दोनों हो सकता है मेरे को। वात मेरे और पित्त को दोनों? जी, होती है, बट क्या होती पित्त है? पहले हो जाता है, पित्त नहीं होता है। पित्त नहीं होता, हाँ, वात होती है। तो अब वात में भी ऑब्जर्व करिएगा क्या डिफरेंस आता है, बिकॉज हम जो स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज मेरा बॉडी तो कफर टाइप का है, तो आई कैन स्पीक ऑथोरिटेटिवली और विथ कन्विक्शन, बिकॉज मैंने एक्सपीरियंस किया है, एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपीरियंस किया है, रिजल्ट्स मिले हैं। सो आई कैन स्पीक विथ कन्विक्शन। वात और पित्त मेरा टेंडेंसी नहीं है। सो आई विल नॉट बी एबल टू ब्रिंग द सेम कन्विक्शन दैट आई कैन अंटिल आई हैव अ लॉट ऑफ फीडबैक फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। नॉट एक या दो जन का, आई नीड अ लॉट ऑफ फीडबैक। डेटा भी व्हाट कलेक्ट आई कर रहे हैं कैन से, आप। राजू, जी, सॉरी मैं बीच में, 1 मिनट। मुझे एक दो सेकंड, चीज, श्यामा जी कुछ बोल रही है, एक सेकंड वेट करिए। दो हाँ, चीजें श्यामा जी पूछी। बोलिए। एक जी, तो श्यामा जी। सॉरी, आपने बोला डांस से कफ होता है, मैंने गूगल किया है, दे से जी, नहीं होता, वेरी हेल्पफुल। दूसरी बात मैं बोल मैं नहीं, आवाज कट रही रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, फिर से बोलिए। हूँ, एक बात डाब से कफ होता है, दैट्स दाब नॉट से, ट्रू, हाँ दैट्स नॉट हाँ। ट्रू, बिकॉज बुखार में भी देते हैं, कफ में भी देते हैं, हम्म, मैंने गूगल किया एंड हम्म। जगह से पढ़ा है, बोले डाब तो रादर इज, आई एम जस्ट नहीं, ट्राइंग टू आई क्लियर। डोंट, नहीं, आई विल नॉट बिलीव व्हाट एनीबॉडी सेज, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस जब मुझे बता रहा है, जब मेरे को हो रहा है, देन आई नो कि वो है। आपकी टेंडेंसी का हो सकता हाँ, है, मे बट भी मेरी टेंडेंसी है। जी, अच्छा, दूसरी बात मैं सो बोल रही थी कि जी, व्हाट व्हेन यू आर डूइंग द प्राणायाम एंड सो कॉन्शियसली आपकी बॉडी भी रिलैक्स होती है ना। जी, आई हैव नोटिस्ड कि मेरा जी, स्ट्रेस जो है, व्हेन आई एम वेरी रिलैक्स्ड या मेडिटेशन या कुछ ऐसे करती हूँ तो ऑटोमेटिक निकलता है, बहुत जोर जोर से यस, निकलता है। सो यस, यू आर डूइंग द प्राणायाम, योर माइंड इज रिलैक्स्ड, योर बॉडी यस, रिलैक्स्ड, तो दैट यस, आल्सो हेल्प्स टेकिंग आउट द वाटर। definitely, ekdam, you're 100% right, because when you are meditative, the impact is immediately on your vascular health. आपके जो वेजो वेजो कंस्ट्रिक्शन स्ट्रेस वगैरह के कारण से जो होता है, इट बिकम्स रिलैक्स, यानी कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स वेजो डायलेशन। दिस इज समथिंग आई बीन टॉकिंग अबाउट अ लॉट लेटली। आर्टिकल्स भी लिखे हैं इस पे, मैंने कुछ वीडियोस भी बनाए हैं। आई एम स्टिल बिल्डिंग दैट क्लैरिटी, बट आई हैव बिकम सो कन्विंस्ड ऑफ द पावर ऑफ vascular health over all our processes. यहाँ डॉक्टर थे अभी, वो तो चले गए, but in our next session tomorrow maybe we can discuss. Oh, he's here. Dr. Shekawat ji, have you noticed the connection between vascular health and overall नहीं, well-being? डेफिनेटली सर, इन ट्रेमेंडस हेल्थ Connection. हेल्थ इम्प्रूवमेंट। जी, आपका मैंने खुद का ही देखा है। जी, आपका जब स्टार्ट किया था, जब आपको बहुत कफिंग था, आप पूरा जी, बाउल भर दिया करते थे। जी, 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 हाँ हाँ। अब तो कब बनता ही नहीं मेरा, मैंने हाँ, बनता नहीं, अभी नहीं बोलूंगा, अभी पता ही बहुत नहीं कम है। हो गया, और अभी बहुत तो कम हो आपको मैंने एक बार विश भी किया था कि यू आर जस्ट गया। यंग मैन। थैंक यू सर, थैंक यू हाँ, सो मच। मेरा नहीं, इशू सर ये बट डॉक्टर है, साहब, आप आपके लोग को जैसे भी यंग आर्थराइट। बना। आई विल हाँ बोलिए, स्टार्ट पर्सनली देन, या नहीं नहीं, ग्रुप में बोलिए, बात करूं। बोलिए मेरा तो जो सर ऑटोइम्यून शॉर्ट में। डिसऑर्डर की तरफ जाता है, मेरे सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं। किस एक डिसऑर्डर? के आर्थराइट, रोमेटिक आर्थराइटिस, आर्थराइटिस, वो कर, हाँ, ओके, वो करते हैं, तो उसमें एक आर ए फैक्टर होता है। यस,
वो पॉजिटिव आ रहा है, परंतु उसके जो आर्थराइटिस के अलग एंटी सीसीपी वगैरह अलग जो कंफर्मेशन टेस्ट है वो नेगेटिव आ रहे हैं। सिर्फ आरए फैक्टर इंक्रीज आ रहे हैं। दूसरा ये तो मेरा परसिस्टेंट पेनक्रियाटिक एंजाइम है, पिछले 7-8 साल से वो एक के लेवल से है, वो बढ़े हुए हैं। आपको हमारा ठीक मेडिकल करेंगे, कुछ तो ठीक करेंगे डॉक्टर साहब, 100% नहीं, ठीक है। कितना होता है वो डिपेंड्स ऑन आप क्या कर पाते हो, बट आपको आपको ठीक होने के मेरा रास्ते वो पे तो ले हफिंग का जाएंगे। सर अल्टरनेट कोई बताइए, क्योंकि मैंने वो ज्यादा फोर्स बताऊंगा, से मैं बताऊंगा। ठीक है। ओके, जी थैंक यू। बताऊंगा, जी मैं रिगार्ड बताऊंगा। सर। जी सविता जी, सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग अ लॉन्ग टाइम, आपका हाथ देख रहा था मैं जी। Yeah, I when you told to do the third part, I have sciatica. I felt like started little tingling the pain Because you because the see, back is squeezing. yes, you brought your attention to the back, but worry not. As we go deeper into the program, you will learn a technique called Hanuman Master Breath, which will actually help you to clear out your sciatica. And if you continue doing it, it will be cleared forever. मुझे sciatica भी हुआ है, fibromyalgia भी हुआ है, और उसको मैंने हनुमान मास्टर ब्रेथ से क्योर किया. You will also be able to Oh, do it, but you will have to be oh. patient and follow the system very well so that you get this Uh, result. So yeah, for I now, have cervical as well, and yeah, optimal neurology also I have along with the sciatica. It's like entire so body the pain. so basically there is, in my understanding, there is a lot of आपके अंदर में stress बहुत है. Your stress is causing vasoconstriction. उसको ठीक करेंगे, सविता जी Oh, उसको ठीक करेंगे जी. yeah. All right. Anyone else? Buttercup जी, yes. सर मैं वही बात पित का आंसर देना चाह रही थी जी. कि आई अर्लियर आल्सो टोल्ड यू आई हैड जर्ड एंड Yeah, GERD, bloating yes. problem also with that, Yes. which affects my respiratory system. That's why. Yes. तो जिनको भी वात और पित्त का भी है, मुझे काइंडली नोट कर दे, या आप जो वो भरेंगे फॉर्म जो फॉर्म दिया मैंने, ठीक है लिंक सर. दिया है, उसको भरेंगे, उसमें मेंशन कर दीजिएगा. ओके सर. कहीं पे हो सकेगा तो मेंशन कर दीजिएगा, नहीं तो कम से कम मुझे एक अलग से नोट डाल दीजिएगा. ठीक है सर. वृद्धि बोत्रा जी, यस वृद्धि जी. सर मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्या कारण होता है? मेरे जैसे पित्त बढ़ा हुआ रहता है कई बार, हमेशा नहीं, और इन्फ्लेमेशन क्यों रहता है? सी इन्फ्लेमेशन का कारण तो डॉक्टर साहब ज्यादा बताएंगे, बिकॉज ही इज अ मेडिकल डॉक्टर, आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर. तो मैं जो बोलूंगा ये वो एक लेमैन की तरफ से बोलूंगा. बट इन्फ्लेमेशन इज बेसिकली द बॉडी ट्राइंग टू हील इटसेल्फ. बॉडी के जो प्रोसेसेस हैं, यदि कहीं पे कोई चोट लगी है, कहीं पे कोई परेशानी हो गई है, कहीं पे कुछ इम्बैलेंस है, तो बॉडी उसको हील करने के लिए ये इन्फ्लेमेशन का इफेक्ट होता है. डॉक्टर साहब आई थिंक यू आर बेटर नहीं सर, क्वालिफाइड टू से. डेफिनेटली यू आर राइट, एंड इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग योर डाइट इटसेल्फ, लाइफ स्टाइल इटसेल्फ. जी. आपके जो जितने भी हम डाइट ले रहे हैं, इन्फ्लेमेटरी डाइट ले रहे हैं, तो वो आपको आएगी वो भी इफेक्ट आएगा, राइट. हाँ, सो आई थिंक यू तो गॉट योर आंसर वृद्धि जी. हाँ, बोलिए बेटे. सर ये वात और पित्त का पता कैसे चलता है? वात का तो चला, वो जो निकलता है कफ वगैरह, वात का मतलब है आपके तो जॉइंट्स पित्त पेन्स का कैसे वगैरह पता है, तो चलता वात प्रकृति है. पित्त है तो आपको, जैसे एसिडिक है तो आपका एसिडिक है. पित्त है. ठीक है, वेरी गुड. बहुत लंबा चल गया, 1.5 घंटा हो गया सेशन. आई थैंक यू थिंक वी सर. विल एंड. बिग नॉट एट ऑल. अचीवमेंट आपका, तो हेल्थी देख के हमें खुश होता है. आपने जिस क्राइसिस से निकल के बाहर आए हैं, जी. और योर सबको स्ट्रॉन्ग, ठीक करेंगे. सिर्फ पित्त होना, पित्त योर स्ट्रॉन्ग विल पावर. नहीं विल पावर से ज्यादा ब्रेथ पावर है डॉक्टर ब्रेथ साहब. पावर से विल हाँ. पावर भी. हाँ जी. डेफिनेटली कम आउट फ्रॉम दैट ऑल दैट. जी. थैंक यू वेरी मच एंड आई थैंक विल यू सी सर. यू टुमारो. आर के वेलनेस, या क्विकली आपका क्या प्रश्न है? सर ये जो टेक्निक आपने कराई है अभी, बिकॉज द हाउ मच टाइम वी शुड डू दिस एक्टिविटी मैंने बताया ना, इन अ पांच डे? पांच 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 बार दिन में 2 बार कर फाइव लीजिए. टाइम, फाइव, एंड इज अ मॉर्निंग इवनिंग बोथ टाइम यू कैन डू, और द यू कैन डू इट इवनिंग में, खाली पेट में करिएगा. खाली पेट? जी. ओके थैंक यू वेरी ओके. मच. थैंक यू, कल फिर थैंक यू मिलते हैं सो मच 6 बजे. सर। हाँ जल्दी आइएगा, टाइम से आइएगा. ओके सर. बाय सर. थैंक यू. बाय बाय. थैंक यू जी. शेयर योर शेयर योर रिजल्ट्स इन द ग्रुप ऑल्सो. थोड़ा थोड़ा ग्रुप में भी अपना अपना रिजल्ट बताइएगा.
नमस्ते Thank you, रिकॉर्डिंग sir. मिलेगा जी। कल अभी शायद अभी थोड़ी देर बाद में मैं डाल दूंगा, थैंक यू यूट्यूब सर में। ग्रेटफुल टू यू थैंक यू थैंक यू जी, वेरी मच थैंक यू जी, थैंक यू नमस्ते जी, थैंक यू। नमस्ते